નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનો 8મો પાઠ સુધામૂર્તિ જોવાનો છે, જે એક જીવની કહેવાય છે, એટલે કે જીવન ચરિત્ર છે. સુધામૂર્તિ સંકલિત છે, એટલે કે આમના કોઈ લેખક ન હોય, પણ સુધામૂર્તિ છે એ જે સ્ત્રી અત્યારે જે આગળ પડતા છે, એટલે એના જીવન વિશેની જે માહિતી હોય એ ભેગી કરી અને આપણને આપેલી અહીંયા છે. सुधामूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है, कारण के महिलाओं ने एक नवो रस्तो नवी राह बतावेली है. इस पाठ में सुधामूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है. स्त्रियों पण बधा कार्यों करी सके छे अने आपणे आजे जोई सकीए छीए के स्त्रियों घणा बधा क्षेत्रों में आगळ छे. उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया. पछी एने संशोधन माटे टेक्नोलॉजीना क्षेत्रमां पण, दवाखानाना क्षेत्रमां, लखवाना क्षेत्रमां पण पोते कंईक पोतानो फाळो आपेलो छे. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है, એટલે કે મહિલાને મજબૂત કરવા, સશક્ત કરવા માટે પણ એને ઘણું બધું યોગદાન આપેલું છે. તો इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि એને કોઈ હદ બાઉન્ડ્રી નથી. स्त्री गमे ते करी सके तेम छे, तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है. इस बात पर ज्यादा जोर दिया है. कोई पण क्षेत्र में, कोई पण काम में एक कुशलता प्राप्त करी सके छे. इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए. स्त्री छे के पुरुष छे, कोई पण जाति होय एना वच्चे कोई भेदभाव होवो जोईए नहीं. आ मुख्य संदेश है, कारण के स्त्री पुरुष में भेदभाव आज पुरुषों जे कार्यों है ए स्त्रीओ करे ज छे. तो हवे आपणे पाठ जोईए. अप्रैल 1974 की बात है. आ जे बात करवामां आवे छे ए एप्रिल 1974 नी अंदर घटेली छे. बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी, एटले के उनाळानो समय हतो. थोड़ोक आमे दक्षिण भारत है એટલે गरमी तो होय ज, पण गरमी थोड़ी વધારે પડવા લાગી थी. भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर एटले जे एनु आसपासनी जग्या होय, जेने आपणे एनु प्रांगण कही शकाय एवुं, में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे. એટલે गुलमोहर जे छे ए लाल रंगना फूलोथी एक छवायेला हता, कारण के उनाळाना समयमां ए एकदम फूटी निकलेला था. कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टेल की ओर जा रही थी. हवे कंप्यूटर विज्ञान अहींया टेक्नोलॉजीनी वात छे, एटले के एंजीनियर. तो कंप्यूटर विज्ञाननी एक क्लास कक्षा एटले क्लास पूरो थयो अने एक छात्रा एटले के विद्यार्थिनी हॉस्टेल तरफ जई रही हती कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी. विज्ञापन एटले जाहेरात. अहींया जाहेरातनो अर्थ छे एक नोटिस बोर्ड पर जाहेरात हती, एना उपर यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को एटले के टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था. एक जाहेरात हती, ए ऑटोमोबाइल कंपनी छे टाटानी, एना तरफथी हती अने जे लोकोने नौकरी करवी होय, नौकरीनी ईच्छा होय एना माटे हती. कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी. एने योग्य एटले के नौकरी माटे जे लायकात हती ए लायकात वाळा अने परिश्रमी एटले खूब ज मेहनत करनार एवा इंजीनियरोनी जरूरियात हती. चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, एटले के एक आश्चर्यचकित करने वाली, आंचको आपनारी एक लाइन हती, एकदम नाना अक्षरों में छेल्ले लखेली हती. ए हती महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. एटले के जो कोई महिला एटले के स्त्री उम्मीदवार एटले के नौकरी इच्छुक होय तो एने अरजी करवानी नथी. आवेदन एटले अरजी, एने अरजी करवानी नथी. एटले के स्त्रीओए अरजी नहीं करवानी. उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, एक बार नहीं 2 बार वांच्યું કે આવું શા માટે લખ્યું છે. हाँ, यही तो लिखा था. એટલે કે આ જ લખેલું હતું કે સ્ત્રીઓએ અરજી કરવી નહીં. उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से
स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। એટલે એને કોઈ નોકરીની જરૂરિયાત હતી જ નહીં, કારણ કે સ્નાતક એટલે કે ગ્રેજ્યુએટ થઈને સ્નાતક એટલે ગ્રેજ્યુએટ પછીની વાત હતી કે ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી એને રિસર્ચ માટે એટલે કે સંશોધન માટે એને છાત્રવૃત્તિ એટલે કે શિષ્યવૃત્તિ જે આપણે કહીએ છીએ સ્કોલરશિપ મળવાની હતી, એ બધું નક્કી થઈ ગયું હતું, એટલે એને કંઈ હતું નહીં, આગળના અભ્યાસ માટે સ્કોલરશિપ મળવાની હતી, એટલે નોકરીની કોઈ જરૂરિયાત નહોતી। पेशकश એટલે प्रस्ताव। અહીંયા वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, એને પણ વિદેશ જઈ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું હતું, પરંતુ यहाँ यह भेदभाव પણ અહીંયા કારણ કે સ્ત્રી પુરુષ એને સ્ત્રીઓ ના પાડેલી હતી એપ્લિકેશન માટે, અરજી કરવા માટે, તો આવો ભેદભાવ થોડો ચાલે। સ્ત્રી પુરુષ में इतनी असमानता, स्त्री पुरुष में आटली बधी असमानता होय, कारण के आम આપણે ગણીએ છીએ કે ભારતના તમામ નાગરિકો સમાન છે, તો પછી નોકરી માટે આટલો ભેદભાવ કેવી રીતે? બાત ઉસે કુછ પચી નહીં, એટલે કે હજમ ન થઈ, એને આ વસ્તુ છે એને સ્વીકાર ન કરી શકી અહીંયા, કારણ કે સ્ત્રી પુરુષમાં આટલો ભેદ કે સ્ત્રીઓને ના પાડવામાં આવે તો એને ન પસંદ આવી। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी, कारण के ये हमेशा पोताना क्लास में पहलो नंबर आवती थी, अने कम्प्यूटर विज्ञान नो जे एनो क्लास हतो एनी अंदर बधा पुरुषो ज हता, एकमात्र ते स्त्री हती, एटले के छोकरी हती, योग्य थी, कारण के ए लायक हती, कारण के पहलो नंबर आवतो तो भणवामां होशियार हती, परिश्रमी थी, मेहनत पण करती थी। नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा, एने विचार्યું કે नहीं मारे कई करवू ज पड़शे, केम स्त्रीओने ना पाड़ी, એટલા માટે એને વિચાર્યું इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, એને વિચાર્યું કે આ भेदभाव सहन कराय नहीं અને હું કરીશ नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी, एकदम विरोध करशे અને जोरदार विरोध करशे, कारण के आ सहन करी शकाय नहीं। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टेल की ओर चल दी। एनी पासे डायरी हती, पेला जूना जमानामां डायरीओ ज राखता, कारण के एमां नोंध करता बधी, तो एनी अंदर एने जेटली सूचनाओ एमां जरूरी हती, एनुं एड्रेस होय, एनी कंपनीनुं नाम ने जे बधुं हतुं ए लखी लीधुं अने एकदम स्पीड में हॉस्टेल तरफ चाली गई। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है, अने एने नक्की करी लीधुं कि टेल्को कंपनीना जे उच्च अधिकारी हशे ए अधिकारीओने ए लक्ष्य जाणकारी आपशे कि एनी कंपनी आ प्रकारे स्त्रीओ साथे अन्याय करी रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। कोई एने अधिकारी कोण हतो, उच्च अधिकारी एने खबर नहोती, खाली एटली ज खबर हती कि टाटानो जे आखो ग्रुप छे समूह, एना जे प्रमुख छे प्रेसिडेंट छे ए JRD टाटा छे, एटली ज एने खबर हती। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया, पेला पोस्ट कार्ड आवतुं टपाल माटे पीळुं, तो ये पोस्ट कार्ड लीधुं, कारण के एटली बधी त्यारे समाचारनी ने एवी कोई व्यवस्थाओ नहोती, एटले के टेलिफोननी ने एनी, तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। संबोधित करवू एटले के एने संबोधन करीने एना विषे बात करीने लखेलू कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। तो टाटा कंपनी सौथी पहेलुं लोहा इस्पात एटले लोखंड पोलादनो उद्योग सौथी मोटो हतो, रासायनिक पदार्थ एने कपड़ा अने मशीनोना के मोटा मोटा उद्योगों तमे लगाव्या छे, मोटा मोटा कारखाना शुरू करेला छे। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान जे एंजीनियरों ने तैयार करे छे एनी स्थापना माटे तमे आगळ आवीने तमारो फाळो आपेलो छे। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मारू सद्भाग्य छे कि तमे जे संस्थाने स्थापवामां फाळो आपेलो छे ए ज संस्थानी अंदर हूँ भणी रही छूं। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी
स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। એને એમાં લખેલું હતું કે ભાઈ હું તો ખૂબ જ હેરાન છું, પરેશાન છું આ રીતે કે આવડી મોટી કંપની સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે આવો ભેદભાવ રાખે કે સ્ત્રીએ એપ્લિકેશન નહીં કરવાની, ખાલી પુરુષો જ કરી શકે। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा, तो 10 જ દિવસમાં કંપનીએ એને તાર મોકલ્યો, તાર ટેલિગ્રામ। કારણ કે પહેલાના સમયમાં મેં કીધું એમ સંદેશા વ્યવહારની એટલી સગવડતાઓ નહોતી એટલે તાર આવ્યો। कंपनी के खर्चे पर पुना शहर में साक्षात्कार એટલે કે ઇન્ટરવ્યુ કે લીએ ઉપસ્થિત હો, એને તાર મળ્યો કે કંપનીના ખર્ચ એટલે કે તમને આવવા જવાનો ખર્ચ પણ એ કંપની જ ચૂકવશે અને ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે પુના શહેરની અંદર એને બોલાવી। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुना पहुंची। आवश्यक तैयारीઓ એટલે કે જે તૈયારી કરવાની હતી, સર્ટિફિકેટો એને હોય, પ્રશ્નોત્તરી માટે એને જે જવાબો તૈયાર કરવાના હોય એ બધું કરી અને પુના ગઈ। साक्षात्कार आरंभ हुआ એટલે કે ઇન્ટરવ્યુ શરૂ થયું। કાફી તકનીકી પ્રશ્ન પૂછે ગયે। તકનીકી એટલે ટેકનોલોજીને લગતા, કારણ કે એને એવું હતું કે સ્ત્રી છે એટલે ટેકનોલોજીને લગતા પ્રશ્નો નહીં આવડે, તો એને ઘણા બધા કાફી એટલે ઘણા બધા ટેકનોલોજીને લગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા। जिनके वह सही सही उत्तर देती गई, એના એ બધા સાચા જ જવાબો આપતી ગઈ। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, ત્યારે બુજુર્ગ એટલે વૃદ્ધ, સજ્જન એટલે સારો માણસ જે હોય એવા, સ્નેહમયી એટલે કે પ્રેમ વાળી ભાષામાં, એક પ્રેમ રૂપી ભાષામાં કીધું કે तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था, કે તને ખબર છે કે અમે સ્ત્રી ઉમેદવાર અરજી ન કરે એવું શા માટે લખેલું। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, कारण के फैक्ट्री में जो मुख्य कार्यस्थल है ज्यां मेन काम थाय छे त्यां कोई पण स्त्रीनी नियुक्ति एटले के निमणूक करवामां आवती नथी। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी एटले होशियार, बुद्धिशाળી, કે તારા જેવી જે બુદ્ધિશાળી છોકરીઓ છે એને અનુસંધાન એટલે કે સંશોધન શાળા એટલે કે રિસર્ચ લેબોરેટરીમાં જઈને કાર્ય કરવું જોઈએ। अनुसंधान शाला मतलब रिसर्च लेबोरेटरी। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आ स्त्री के छे के આપણે ક્યાંકથી તો શરૂઆત કરવી જોશે ને, કે આપણે કાયમ માટે એમ જ કહીએ કે સ્ત્રીઓએ હંમેશા રિસર્ચ લેબોરેટરીમાં જવું જોઈએ, પણ આપણે ક્યારેક તો શરૂઆત કરવી જોશે ને। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। नहींतर तो क्यारे कोई स्त्री तमारी फैक्ट्री के कारखानु जे छे एनी अंदर काम नहीं करी पाए, એટલે કે काम नहीं करी सके। उसने दृढ़ता से कहा, एकदम दृढ़ थईने मजबूत थईने भारपूर्वक कीधुं। एक लंबे साक्षात्कार के बाद એટલે કે એક લાંબા इंटरव्यू पछी अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, પછી इंटरव्यू पूરું થયું અને પછી વૃદ્ધ સજ્જને કીધું, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई એટલે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન। આ શરૂઆત તારાથી જ કરવામાં આવે છે અને તારાથી જ અમે શરૂઆત કરીએ છીએ। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, કારણ કે આની પહેલા ટાટામાં કોઈ પણ મહિલા એન્જિનિયર નહોતી, આ પહેલી હતી। એનું નામ હતું સુધા કુલકર્ણી। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। टेल्को कंपनी में बीजा एक एंजीनियर था, एनु नाम हतुं नारायण मूर्ति, एनी साथे एमना लग्न थया। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, એટલે કે રિઝાઇન કરી દીધું। 8 વર્ષ સુધી ટેલ્કોમાં નોકરી કરી અને પછી નોકરી છોડી દીધી 1982 માં। त्याग पत्र એટલે કે રિઝાઇન કરી દીધું એને। और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। आ कम्प्यूटर सॉफ्टवेर माटे छे इन्फोसिस कंपनी, ए एने बेंगलोरनी अंदर, जेने बेंगलुरु हवे कहेवाय छे, त्यां एने खोलेली एना पति साथे। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की, એટલે કે બેયની એટલી બધી અહીંયા મહેનત હતી, એની લગન, એની ધૂન હતી એમાં કે દિવસે ન વધે એટલી, એનો દિવસે વિકાસ ન થાય એટલો રાતે, રાતે ન થાય એટલો દિવસો, મતલબ કે
सतत विकास थतो गयो। सुधामूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। એટલે એનું જે આખું ઇન્ફોસિસ કંપની હતી એની ચેરપર્સન એટલે કે અહીંયા હેડ બનેલી 1996 में। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है, भेगो भेगो सामाजिक विकास पण करे छे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। कार्यरूप एटले के एने संचालित कर दीधुं। दरेक स्कूलनी अंदर एक एक कंप्यूटर आप्યું અને लाइब्रेरी पण एने वसावी दीधी दरेक स्कूल में। सुधामूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। हवे सुधामूर्ति पूरेपूरी टोटली समाज सुधार माटे ज काम करे छे। बेलारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कारण के आटली जग्याओ छे बेलारी, बीजापुर ने हुबली, एना होस्पिटलों माटे सारामां सारा टेक्नोलॉजी वाळा डाक्टरी साधनों एने आपेला होस्पिटलोनी अंदर। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेलारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। એટલે જો એને કેન્સર હોસ્પિટલ પણ કરાવી, અમુક જગ્યાએ એને મેડિકલ સહાય એટલે કે હેલ્પ કરી, મતલબ કે કોઈ બીમાર હોય એના માટે એને વ્યવસ્થાઓ કરી આપી। પછી જ્યારે જ્યારે અમુક જગ્યાએ સુખા પીડિત એટલે કે જ્યારે દુષ્કાળ પડેલો તો એમાં પણ લોકોને એને મદદ કરેલી। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। एना अथाग प्रयास थी के प्रयत्नों थी कर्नाटकना लगभग 800 थी वधु जे गाम छे एनी अंदर कंप्यूटर शिक्षण चालू थई गयुं। एना माटे एने 1 करोड़ रुपया फाळवेला अने 3000 थी वधारे पुस्तकालय એટલે કે लाइब्रेरी पण खोलवामां आवी। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, कारण के जे भणी सके एम न होय एने आगळ भणवुं होय तो एने मदद करी। स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, स्कूल बिल्डिंग बनाव्या। जे गामनी अंदर स्कूलना बिल्डिंग नबळा होय अथवा न होय त्यां आवा बिल्डिंग बनाववामां आव्या। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चे को छात्रवृत्ति दी, એટલે કે જે ભણવામાં હોશિયાર હોય, સારા ટકા લઈ આવે એમને સ્કોલરશીપ આપવામાં આવી। और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। गामनी अंदर पण एने 300 जेटला कंप्यूटरों वहेंचेला। 13 पुस्तकों की लेखिका, 13 तो इन्हें पुस्तक लखेला है। सुधामूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। इन्हें केटला एवॉर्ड पण मळेला है, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार। मिलेनियम एटले 100 वर्षनो महिला शिरोमणि जे आगळ पड़ता होय एना माटेनो पण पुरस्कार मळ्यो। वुमेन ऑफ द ईयर 2002 एफएम रेडियो द्वारा आपेलो छे, એટલે કે एफएम रेडियो द्वारा 2002 ની सर्वश्रेष्ठ महिला माटेनो હતો। राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि आ બધું મળેલું છે। सुधामूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। અહીંયા એને પોતાની उपलब्धि હતી એનાથી માર્ગ પ્રશસ્ત એટલે ખોલેલો છે, महिलाओं માટે માર્ગ ખોલી દીધો છે। कारण के उपलब्धि एटले प्राप्ति, एने जे अत्यार सुधी प्राप्त कर्युं ए प्राप्तिथी एने महिलाओं माटे पण मार्ग खोल्यो के दरेक स्त्री पण आ करी शके एम छे, जे एमणे कर्युं। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एटले के यूनिवर्सिटीओं में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% एटले के 50% संख्या लड़कियों की है। आज इंजीनियरिंग में पण छोकरीओ स्त्रीओ मंडी जवा। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। कारण के मशीन पहला तो कोई नहोतुं, हवे अनेक एवा उद्योगों छे के जेमां मशीनोनी वच्चे पण स्त्रीओ अथवा तो छोकरीओ एकदम आसानीथी अने होशियारीथी काम करी रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधामूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। प्रतिभा एटले एक शक्ति अथवा योग्यता जे असाधारण असामान्य काम करी शके तेम होय, तो एने जे करीने बताव्युं एनी प्रतिभा, एनी लगन, एनी धून, एनी मेहनत
અને એનાથી એને આ જે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી છે એ માર્ગ ઉપર નવી પેઢી આગે વધે છે, એટલે કે નવી જે બીજી છોકરીઓ પણ એના રસ્તે આગળ ચાલી રહી છે એ જોઈને એને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. ખુશી છે ન ફૂલા ન સમાના, મતલબ કે ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે, ખૂબ જ આનંદ થાય છે એને. મહિલાઓ કી સફળતા પર વે કહ ઉઠતી હૈ, મહિલાઓ જે સફળ થાય છે એનાથી કહે છે કે હમારા માર્ગ કઠિન અવશ્ય है किंतु चलना जरूरी है. માર્ગ મુશ્કેલ છે પણ ચાલવું તો જરૂરી છે, કારણ કે જો ચાલવાનું બંધ કરી દેશો તો મંજિલ એટલે કે આપણે જ્યાં પહોંચવાનું છે તે જગ્યાએ આપણે પહોંચી શકશું નહીં. તો હવે આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોઈ લઈએ. सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो ये आवश्यक कंप्यूटर विज्ञान. किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? तो एमा आवश्यक टेल्को. विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? महिला पुरुष का. सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहां बुलाया गया? तो पुणे. लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो एमा आवशे एफएम रेडियो. હવે એક એક વાક્યમાં उत्तर है. टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था. विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी. विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में यह विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डट कर सामना करेगी, विरोध करेगी. वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? सुधा कुलकर्णी ने श्री नारायण मूर्ति से शादी की. इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को एक एक कंप्यूटर दिए और लाइब्रेरी की स्थापना की. सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर यह कह उठी कि मार्ग कठिन है लेकिन चलना जरूरी है. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? હવે હું તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ ટૂંકમાં જ આપી દઉં છું અને ગુજરાતીમાં, કારણ કે આ તમને પાઠમાંથી પણ મળી જશે. કારણ કે કવિતા હોય ને તો એના માટે થોડાક મુશ્કેલ હોય, પણ આના માટે નથી. પણ છતાં પણ હું થોડીક તમને માહિતી ગુજરાતીમાં જ અત્યારે આપી દઉં છું. તો ટેલ્કો વિજ્ઞાપનમાં ચોંકાવવાવાળી વાત એ હતી કે એક તો એ મોટી કંપની હતી, છતાં પણ એમાં એક લખેલું હતું કે સ્ત્રી ઉમેદવાર જે છે કે મહિલા ઉમેદવાર છે એ અરજી ન કરે. આ સૌથી ચોંકાવવાવાળી વાત હતી. બીજું, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो એને આ જે જાહેરાત હતી એ જાહેરાત વાંચી એને નક્કી કર્યું કે આ ભેદભાવ છે એ સહન કરી શકાય એમ નથી અને એના માટે એને કંઈક કરવું જ જોઈએ અને એનો સામનો છે એ દ્રઢતાથી કરશે. એટલા માટે એને સર્વોચ્ચ અધિકારી જે હતા એને પત્ર લખ્યો અને આ પ્રકારનો અન્યાય છે એ दूर કરવા માટે કહ્યું. सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो एना माटे एने सामाजिक विकास, समाज सुधारवानुं कार्य कर्युं. अमुक जग्याए राहतना काम पण करेला हता. सरकारी स्कूलों माटे एक एक एने कम्प्यूटर आप्युं. लाइब्रेरी चालू करी दीधी. કેટલી હોસ્પિટલોની અંદર એને ઘણા બધા સાધનો આપેલા છે. કેન્સર હોસ્પિટલ શરૂ કરાવી અને જે જગ્યાએ દુષ્કાળ પડેલો હોય તો એવી જગ્યાએ પણ એને મદદ કરી. ગામડાઓની અંદર પણ કમ્પ્યુટર આપ્યા.
સ્કૂલોના મકાનો બનાવી દીધા, વિદ્યાર્થીઓ જો હોશિયાર હોય, સારા ટકા લઈ આવતા હોય તો એને છાત્રવૃત્તિ એટલે કે સ્કોલરશીપ આપી. कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो एना माटे कर्नाटक सरकार अने बाकीनी संस्थाओं द्वारा एने राज्योत्सव पुरस्कार आप्यो, ओजस्विनी पुरस्कार मळ्यो, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार मळ्यो, वुमन ऑफ द ईयर एफएम रेडियो द्वारा 2002 एवोर्ड आप्यो, राजलक्ष्मी पुरस्कार मळ्यो. हवे 4-5 वाक्य में उत्तर है. साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? तो इंटरव्यू ની અંદર એને કેટલાય ટેકનોલોજીને લગતા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા, એનો એને સાચો જવાબ આપ્યો હતો. અને ત્યાં એક જે વૃદ્ધ સજ્જન માણસ હતા એને કીધું કે ભાઈ મહિલાઓએ તો ફેક્ટરીના કામમાં ફેક્ટરીઓના મુખ્ય સ્થળ ઉપર કામ કરવા દેવામાં આવતી નથી, અને ખાસ કરીને તારા જેવી જે સ્ત્રીઓ છે એને જે રિસર્ચ લેબોરેટરી એટલે કે અનુસંધાન શાળાઓમાં જઈને કામ કરવું જોઈએ. અને આ સાંભળી અને એને દ્રઢતાપૂર્વક કીધું કે ક્યાંકથી તો આપણે શરૂઆત કરવી પડશે ને, નહીતર તો તમારી ફેક્ટરીની અંદર કોઈ સ્ત્રી ક્યારેય કામ કરી શકશે નહીં. અને આ રીતે એને સુધાને એન્જિનિયરના પદ આપવામાં આવ્યું. સુધા કે સ્થાન પર આપ હોતે તો ક્યાં કરતે? તો આપણે આપણી રીતે દેવાનો છે, કારણ કે આજનો સમય છે એ સ્ત્રીઓનો સમય છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. કારણ કે આજની સ્ત્રી અને પ્રાચીન જે સ્ત્રી હતી એ ઘણો ફરક એમાં આવી ગયો છે. કારણ કે જૂના સમયની અંદર પણ સ્ત્રીઓ ઘણી બધા ક્ષેત્રમાં આગળ હતી. જૂના સમયમાં અત્યાર કરતાં પણ વધારે સ્વતંત્રતા હતી ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં. એ શાસ્ત્રાર્થ પણ કરતી હતી. તો ધીમે ધીમે એ પુરુષ પ્રધાન સમાજ થતો ગયો. એટલા માટે અહીંયા આપણે આપણી વાત કરવાની છે કે આપણે હોય તો શું કરી શકીએ. તો આપણે એની જગ્યાએ હોય તો કોઈ મહિલા સંગઠનોનો સહારો લઈને એની સામે કોઈ આંદોલન કરી શકીએ, એને રજૂઆત કરી શકીએ, એને આ ભેદભાવ દૂર કરવા માટે આપણે કોઈ પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ આગળના જમાનામાં આટલા ક્ષેત્રમાં આગળ હતી તો અમને પણ આવો ચાન્સ આપવો જોઈએ. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो सुधा मूर्ति एक साहसी स्त्री कही शकाय અને દ્રઢ સંકલ્પ વાળી સ્ત્રી હતી. કારણ કે એને જે મનમાં નિશ્ચય કરેલો એ પૂરો કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી અને મહિલાઓને એક નવો રસ્તો આપ્યો. કારણ કે પહેલા સ્ત્રીઓ એન્જિનિયરિંગમાં ઓછી જતી હતી, એને એન્જિનિયરિંગ લઈ અને સ્ત્રીઓને પણ એન્જિનિયરિંગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી. ત્યાર પછી જે ટેલ્કો કંપનીનું ઇન્ટરવ્યુ હતું એમાં પણ ભેદભાવ જે કરવામાં આવ્યો હતો સ્ત્રી પ્રત્યે એનો પણ મુકાબલો કર્યો અને એ ત્યાં નિયુક્ત કરવામાં આવી. ત્યાર પછી એને ઇન્ફોસિસ કંપનીની સ્થાપના કરી. એના દ્વારા એને સમાજનો વિકાસ, સમાજ સુધારવાનું કામ, શિક્ષણના ક્ષેત્રે, આરોગ્યના ક્ષેત્રે કામ કર્યું. આ રીતે એને સ્ત્રીઓને પ્રેરણા આપી કે તમે પણ આ વસ્તુઓ કરી શકો છો. હવે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે पर्यायवाची शब्द दीजिए. परिसर तो प्रांगण, शुरुआत तो आरंभ, मेहनत तो श्रम, सूखा तो अकाल, अनुसंधान तो संशोधन, पुरस्कार इनाम. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए. आवश्यक, अनावश्यक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उपस्थित, अनुपस्थित, सज्जन, दुर्जन, अपना, पराया, उच्च, निम्न अथवा नीच, अधिकतम तो न्यूनतम. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए. अधिक तो अधिकता, सफल तो सफलता, आवश्यक तो आवश्यकता, असमान तो असमानता, पुरुष तो पौरुष અને स्त्री तो स्त्रीत्व. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तो पहला फूला न समाना मतलब कि अत्यंत प्रसन्न होना, और बात न पचना मतलब बात गले न उतरना. તમે વાક્યોમાં તમારી રીતે
उपयोग કરી શકો છો। निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से उन्नति करना। तो અહીંયા આપણો આ પાઠ છે એ પૂરો થાય છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટમાં પાછા મળશું।